Good morning and a very warm welcome to all the attendees. I am Mahir Shah, Senior Manager at Omniscience Capital. And on behalf of the entire team at Omniscience, I welcome you all to our first webinar for financial year 24-25. At Omniscience, our focus this financial year is going to be on celebrating India. In today's world, where currently and often leans towards negativity, we have chosen to focus on the positives. Instead of dwelling on failures, we are here to celebrate small victories and embrace a more uplifting perspective. Our theme for today is the Great Indian Railways, where we celebrate 172 years of the Indian Railways. Indian Railways have become such an integral part of our daily lives that its significance is often overlooked. Beyond being used as a mode of transportation for millions, it actually serves as a vital pillar of the Indian economy. So now, since we have limited time, without wasting any further time, the speakers for today, Dr. Vikas Gupta, who is the CEO and founder of Omniscience Capital. Dr. Gupta is a BTech from IIT Bombay and has done his master's and doctorate from the Columbia University, New York. Along with him, we have Mr. Ashwini Kumar Shami, who is the co-founder and portfolio manager at Omniscience Capital. Mr. Ashwini Kumar Shami has done his BTech and MTech from IIT Bombay and has done his MBA from IIM Lucknow and Toulouse Business School, France. Both of them are a part of the investment committee at Omniscience Capital and were practically the first ones in India to identify railway as a sector and to build a portfolio of stocks almost around 2.5 years before the first index was launched by NSE India. During this course of webinar, if you have any difficulty in understanding any concepts or have any questions for our speakers today, please feel free to drop your queries in the chat. We have received a lot of queries during registration as well, and we'll try to address them during the course of this webinar. Over to you, Vikas sir and Ashwini sir. Yeah, hi. Good morning, everyone. And Good morning. Thank you for joining this webinar. So I welcome you, Vikas, and let me straight get to the point where there's a lot of volatility that the markets are going through, and typically we have seen people lose focus. Especially the most important thing when it comes to equity market, which is long-term horizon and allocating capital for long term. And different kind of biases kick in, especially loss aversion bias when people see their portfolios tanking and markets, taking swings of, let's say, 5-6% or 10% in a one single day. So we thought that let's try to bring focus back to the long-term investing and put the important context in place. So let me begin with a quote from the greatest investor, Warren Buffett. He says that uncertainty actually is the friend of the buyer of long-term value. And in that context, I think let's try and put out our view on the global tariff war that is going on and what it basically means for companies and economies broadly, and how do we see that? Sure, absolutely. So every uncertainty, there is an opportunity, and uncertainty is where you have to keep your head calm and analyze. So let's look at the analytical. So this is the disclaimer, which I think. So understanding the global tariff war. So effectively, we can classify companies into a few types here, and accordingly, we have to choose. So the best thing which isolates you, completely insulates you from the global tariff war is the strong domestic company, right? So that keeps you safe in the place where you are not impacted directly by the tariff war. Of course, there could be a global slowdown and all that,
and that will impact every country. But for India, the global linkage is much less. And then if you focus on strong domestic companies, the impact would be significantly less. Uh, that is the best investment opportunity. Second best investment opportunity are strong global companies. So these are companies which basically are global. So they have a lot of interlinkages, either from buying inputs, right? So components, etc., and from selling to the global markets. So they will be impacted in the near term. And the near term here could last from anywhere from several quarters to several years. So you need a 3 to 5 year, ideally 5 year horizon here, right? During which time you should expect global trade to go through kind of volatility. So during this time, it will be difficult for predicting the earnings as well as revenues of the strong global companies as well. But the fact is that once the reset happens, once the disruption is over from the trade war and things stabilize, naturally the strong global companies are going to be dominating again and gain market share from weak global companies. So the weak global companies, they're going to get in trouble in the near term, as well as many are likely to, if their balance sheets are weak, if their cash flows are already negative, or they have just borderline profitability, right? They are going to disappear over the next couple of years or 2 to 4 years. And so the strong global companies will gain market share from them. And then finally, the weak domestic companies you have to be careful about because they're purely domestic and US is going to put tariffs to protect their weak domestic companies. India would also put some anti-dumping laws, right, to protect from the rest of the countries dumping. For example, China or some other countries, low-cost countries, dumping their stuff in India. So India could also put up some kind of a temporary or permanent tariffs or anti-dumping duties, and that would protect the weak domestic companies in the near look like strong companies. So you have to be careful about that and not invest in those, right? So I hope it summarizes. Again, to reiterate, avoid weak global companies at all costs. Don't get lured into weak domestic companies. Focus on strong global companies only if you have a long-term horizon. And definitely, if you get at reasonable valuations, only then invest in the strong domestic companies. Again, valuation is very critical. You cannot forget that. Just because something is insulated from rest of the world and the revenues are going to grow and profits are going to grow even next 6 months and 1 year and 5 years, you cannot pay any price, right? You have to pay the right price. Correct. In fact, this is akin to, let's say the COVID era or where, certain companies, because suddenly the healthcare requirement went up or, companies producing, let's say PPE kit, their requirement went up. And obviously for, let's say, a couple of years, the growth was crazy and, people paid a lot of premium and then they realized that it was overvalued. Or Absolutely. in other words, or in other case, China or some countries put restrictions on, when they become more environment focused and they wanted to clean up. And some of the chemical industries and those kind of industries got a bigger market share temporarily, right? But that Yes, growth will not be long term. And when we say long term, we're looking at least 10 years, right? So that exactly. should be the horizon. True. So, so interestingly, we have we have been focusing completely, interestingly strong companies and primarily focused on domestic, revenues, domestic activities. So I think it's a very, kind of interesting time to, focus on this particular growth factor. And that's why we thought that this week, this month, or for in the near term, we will try and bring this, particular investment opportunity on the surface. So let's discuss about, what kind of opportunity we are talking about here, Vikas. Yeah, so just to also correct what Mahir said, that we identified this like end of or sometime in 2019 and 2020.
and we launched a portfolio on railways somewhere around Jan 2021, right, in the first week. So and the railway index actually came out, if I remember correctly, November 2024 from Nifty, right? So this is like a nearly 4 years later from when we came up with this. So just to put the data correctly out there. So this is a huge opportunity. 50 trillion rupees, nearly $600 billion, right? 600 billion के करीब होता है ये. And ये target is till 2030, right? So somewhere around 2020, this was stated कि 2030 तक इतना capital लगेगा to become a future ready railway system. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें. और इसमें सबसे बड़ी opportunity is obviously the focus is to bring the logistics cost down. So इंडिया का logistic cost करीब 14% of GDP है, which is extremely high, right? और developed countries का below 10 है, और China is actually at 7 or 8% of GDP. तो हमें भी वो कोशिश करना है to bring the total country का logistics cost down, and the best way to do that is through railways, right? क्योंकि अगर हम बनाएं एयरलाइन से लेके waterways तक, तो waterways is the cheapest, but waterways cannot be everywhere in the country. Next cheapest is railways, next cheapest is roadways, and then the airline is very expensive. And roadway और railway भी compare करें तो roughly nearly 40% या 50% cost decline हो जाता है going from roadways to railways. So somewhere around I think 3.5-4 रुपए पड़ता है per ton kilometer in roadways, 3.6 rupees per ton kilometer, while in railways it's about 1.6 ton kilometers. So that's a huge difference, I think. And so that's why the National Rail Plan envisages, increasing the freight share of railways from 27 to 45%. ठीक है, आगे बढ़ते. तो आज रेलवे डे है 16 अप्रैल को, तो हमने थोड़ा एडवांस में रखा है ये. सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द रेलवे डे एंड रिमेंबर इट ऑन द रेलवे डे. तो इस दिन the first passenger train traveled from Mumbai to Thane on April 16, 1853. और अभी हम देखेंगे कितना आगे बढ़ चुका है इंडिया रेलवेज में उस पीरियड से. So this is the railway ecosystem at a glance. तो एकदम बॉटम से आप शुरू कीजिए, राइट हैंड बॉटम से. तो आप देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ट्रैक्स राइट में है. तो सबसे पहले होता है कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर होता है ब्रिजेस, टनलिंग, सिविल वर्क्स. उसके बाद में ट्रैक्स डलते हैं, ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी एंड इक्विपमेंट होता है. फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो रोलिंग स्टॉक वैगन्स, पैसेंजर ट्रेन्स वगैरह के लिए और फ्रेट ट्रेन्स के लिए. उसके बाद में उनको पुल करने के लिए इंजन्स, इलेक्ट्रिक इंजन्स, डीजल इंजन्स. डीजल द वे आउट, वी आर नियर. Then telecom, signaling system, safety systems on the right. उसके ऊपर लगता है सॉफ्टवेयर लगता है आपका रेलवे सिस्टम मैनेजमेंट करने के लिए, ERP वगैरह के लिए, टिकटिंग के लिए. और ULIP, दिस इज द यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस. ओके, तो वो जो PM गति शक्ति प्रोग्राम से इंटीग्रेट होगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में. उसके बाद लॉजिस्टिक्स के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल्स हैं, तो जिसमें रेलवे लाइंस विल बी लाइक द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारे इकोनॉमी के लिए, राइट? पूरे कंट्री में कुछ भी पैसेंजर्स या कार्गो भेजना है इधर से उधर, तो जस्ट लाइक ब्लड में ऑक्सीजन और एनर्जी जाती है इधर से उधर, सेम वे प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड. और रोड्स कनेक्ट होंगे, पोर्ट्स कनेक्ट होंगे, एयरलाइंस कनेक्ट होगी. तो सब तरह के जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स विल कनेक्ट फ्रॉम रेलवे. तो ये होता है मल्टी मॉडल टर्मिनल. और फिर लॉजिस्टिक्स, कार्गो कंटेनर्स, ये सब जो एंसिलरीज हैं, ये लिंक होती है रेलवे. एंड देन ऑफ कोर्स रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर कंज्यूमर्स. तो पावर का लिंकेज बहुत ज्यादा है रेलवे के साथ. इफ रेलवेज डू वेल, पावर कंजम्पशन इज एक्सट्रीमली हाई एंड डू वेल.
and you need to finance all this, And all development of work. this has to be financed. Finance, So right? the opportunities with railway specialized financing as NBFCs, as well as a lot of banks which finance railways, right? And maybe power or infrastructure financing Other companies infrastructure broadly. financing companies, absolutely. Yes. Yeah. So the whole ecosystem that one should look at and take exposure to if they really want to do railway investing into the railway domain, and not focus only on the the pure play or the ones that are much talked about, because then valuations is something that everyone. But before we get into the specifics of the portfolio, let's try to talk about, like, on various fronts, how that future ready or that modernization, in what context that is shaping up, because that will give, I think, a discussion go be, or that what kind of large amounts are being spent and where, and obviously when many of these observations are being felt by a lot of people in their day-to-day life also. But uh, that's what the next. But before even getting into those specifics, I think let's put the context in terms of why railway is important, why logistics is important, and what is the overall vision where these plugs actually fit into nicely. Yeah. तो ये साल की बात करते हैं, right? So अमृतकाल, the period from 2022, इसमें phase 1 में जो हुआ वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस था, right? So digital infrastructure where you had things, telecom as the digital foundation providing the base layer, और इसके ऊपर आधार, जनधन accounts, and on top of that, then the UPI, etc., digital transaction systems came into place, right? And this is being done in trillions of dollars annually of transactions are happening now, and billions of transactions per month. Right, तो ये होने की वजह से now payment capability across India is available. Right, you can transact anywhere to anywhere, and with GST there is no friction across states. Right, you can again sell anywhere to anywhere, and with platforms like ONDC, जो कि government का platform है, similar to Amazon and Flipkart. Right, तो a guy sitting in Madurai can sell to a guy sitting in Chandigarh. राइट, तो अभी ट्रांजैक्शन सिस्टम हो गया, पैसा भी पेमेंट हो सकता है, ये phase 1 हो गया. अब phase 2 में आपको जो we discussed that at the first slide, that 14% is the logistics cost, right? So to transport the good once the order is there, that is very expensive. अमृत का फोकस है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये सब के बीच में गति शक्ति है, और इंटरनेशनल ले जाने के लिए आईमैक है, राइट? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो रशिया टू ईरान से इंडिया आएगा, भारतमाला सागरमाला, इंडिया को कनेक्ट करना है कोस्टल रीजन से, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज टू मेक एवरीथिंग ग्रीन, राइट, एंड सो ऑन. सो नेशनल रेल प्लान की हम बात कर रहे हैं इसमें, विच आई ऑलरेडी मेंशन कि एकदम जो पूरे इकोनॉमी का काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट, एकदम जो कोर पे है. तो हम रेस्ट ऑफ द टाइम अभी इस पे डालेंगे, पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर. दिस रेलवे थिंग इज पार्ट ऑफ अ ह्यूज अमृतकाल विजन. Okay, and it will play a very important role, and we are in phase 2 of that. तो इसमें modernizing infrastructure है, various kinds of railways are there. ये metro rail, high speed rail is bullet train, and semi high speed is the kind of Vande Bharat like trains, right? So इनकी अलग अलग speed होती है और अलग अलग capabilities है, purpose अलग अलग है. High speed is for very long distances. Semi-high speed is also for long distances, but it's slightly slower compared to high speed. So high speed का expenses भी बहुत high होता है. And semi-high speed Vande Bharats are completely developed indigenously. तो ये एक बहुत बड़ी achievement है इंडिया की, Indian Railways की especially. तो India's electric railway revolution, ये एक UK based author हैं,
उनका ये स्टेटमेंट है 2025 में ही है, India's rail crews got more done by their mid-morning tea break on January 1st than Britain got done all year. वो कंपेयर कर रहे हैं ब्रिटेन में क्या हुआ और जो साल भर में हुआ उससे ज्यादा इंडिया में फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में हो जाता है. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन हिज आर्टिकल. तो हम वो सेलिब्रेट करना चाहिए इंडियन रेलवेज ने कैसे काम किया है. So this is 100 years of electrifying the Indian railways. That started in 1925. आज 2025 में we are practically there. Maybe end of the year we will be 100% electrified. इस समय we are second highest. एक छोटी सी रेलवे सिस्टम है स्विट्जरलैंड में, that is 100%, which is higher than us as of now. अगर हमें एकदम एक्यूरेट रहना है, और इंडिया 98 या 99% है. और बाकी कंट्रीज का आप देख ही सकते हो, यूके 37, ऑस्ट्रेलिया 10, यूएस इज लेस देन 1. तो हमने 2022-23 में सिर्फ एक साल में पूरे यूके का जो नेटवर्क है उसका 1/3 हमने सिर्फ एक साल में इलेक्ट्रिफाइड कर दिया. तो इसीलिए वो जो यूके बेस्ड ऑथर का जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा वो बताता है कितना फास्ट हम लोग इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं. So rolling stock, the kind of train sets we have developed indigenously, like Vande Bharat. तो Vande Bharat में चेयर कार तो है ही, पर अब स्लीपर वंदे भारत आ रही है. आई एम श्योर आप सब लोग ने ये सुना हुआ है. अमृत भारत ट्रेन्स विच आर द नॉन एसी वर्जन, नमो भारत विच इज रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट, एंड देन द कार्गो वर्जन विच आर द गति शक्ति ट्रेन्स, राइट. और इनकी स्पीड मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर होगी. बट ऑफ कोर्स ये सब जब ट्रैक लेइंग हो जाएगा हाई स्पीड तब ये स्पीड्स अचीव होगी. एंड नेक्स्ट 2-3 years में द प्लान्स आर टू लॉन्च मोर देन 200 वंदे भारत, मोर देन 100 अमृत भारत एंड 50 नमो भारत. After 2026 there are plans also to export Vande Bharats and metro trains. There is a lot of inquiries coming from African countries and South American countries, right? So this is not restricted only to passenger trains, पर कार्गो में भी ये इफेक्ट आ रहा है. तो वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक्ड लॉन्ग हॉल इलेक्ट्रिक पावर्ड ट्रेन वी आर शोइंग, तो ये इंडिया ने किया है. और इस पे मैक्सिमम स्पीड, डीएफसी पे मैक्सिमम स्पीड, नॉट नेसेसरली फॉर डबल स्टैक, फॉर एनी डीएफसी इज अबाउट 100 किलोमीटर पर आवर. और डबल स्टैक में एसयूवी ट्रेन भी एक लॉन्च हुई है जिसमें कि डबल डेकर ट्रेन. वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन इट लुक्स लाइक. तो ये कार ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, एसयूवीज के लिए ये डिजाइंड है. नेक्स्ट स्लाइड पे वी विल सी दैट. Yeah. So just to emphasize the DFC concept a bit here, that DFC में जो OHE जो overhead equipment होता है, normally because of the height constraint, this has been designed specifically so that double decker cargo trains in different form. यहाँ पे तो container stacked up है, and then this is the other example where train which is carrying SUVs. So normally एक one stack होता है, but here they have been stacked, one over the other in this, and it has increased the capacity more than double, right? So जैसा इस slide पे है, so in place of 100 SUVs in one regular train, 264 SUVs can be carried here. Okay, great. Super. So we talked about, I think, different types of trains. We have a 70,000 kilometer network, and we saw, more than 10,000 kilometers of, whether it is bullet train, semi high speed trains that we are adding already. Then we talked about electric, achieved a great feat on that front globally. We talked about different types of indigenously developed train sets. Now because of Vande Bharat concept, the locomotives and the rolling stock has merged. So that's the achievement that we have done on that front. And
third, another aspect of the development is on the station modernization. I think this is the Amrit Bharat scheme. करेक्ट। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे आप देखेंगे, दैट इज द न्यू दिल्ली का नया रेनोवेटेड प्रपोज्ड स्टेशन, राइट। तो इसमें लुक एंड फील इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली फ्यूचरिस्टिक, और इन सब का बेटर एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंचना और निकल, उसको बहुत इजी किया गया है डिजाइन वाइज, राइट। अंदर बहुत सारे रिटेल की फैसिलिटीज होंगी, that you see in some pictures, commercial facilities, which means offices, etc. Right? Waiting areas are going to be extremely modern and futuristic. Plus, वहाँ पे business meetings भी हो सकती हैं, like commercial, we mentioned hotels, etc. तो ये सब बनेगा, and this will apply, of course, जो metros में होगा वहाँ पे बहुत सारा hotels और commercial ज़्यादा होगा, और जो रूरल एरियाज में मे बी व्हाट इज सुटेबल फॉर दोस प्लेसेस, more than 1,300 stations across India are going to be modernized under this scheme. That's a huge opportunity. And work has already started on more than 500 stations as we speak. That's great. So let's move on to the freight side. We talked, primarily, especially in terms of Vande Bharat and, new metro and high-speed trains, that's more passenger-oriented. But there is a lot is happening on the freight side, and freight being very important because, as you talked about, that the idea is to increase the modal share of railway from 27 to take it to 45%, and also it is, let's say, 2/3 or maybe 3/4 of revenues actually come for railway come from freight. So if we have a better modal share and their earnings will grow much faster, they'll be able to allocate better in terms of capital requirements or even the operating expenses on passenger side. They'll have more flexibility. So it's very important to cater or fix the freight issue. Absolutely. ये डेडिकेटेड फ्रेट से वो हो जाता है कि पैसेंजर ट्रेन एंड फ्रेट ट्रेन एकदम अलग हो जाती है, दे नॉट ऑन द सेम ट्रैक, एंड दैट लीड्स टू कंजेशन, राइट। तो पैसेंजर्स को भी ट्रबल होता है, देयर ट्रेन्स गेट अफेक्टेड एज वेल एज द फ्रेट ट्रेन्स गो स्लो। तो ये अलग करने से बहुत फर्क पड़ रहा है डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेन से एंड कॉरिडोर से रादर। एंड पीएम गति शक्ति, दैट इज 11 crore initiative, 11 lakh crore, but actually already more than 15 lakh crore worth of projects have been identified. उसमें से 434 projects are for the 3 economic corridors given in the last budget, right, the previous year. तो उसमें energy, mineral and cement corridors to make the resources, natural resources, and to be moving easily. Then the port connectivity. So this is for imports and exports, right, making that efficient. अगर हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना है, 2030 तक टारगेट वाज 2 ट्रिलियन, और अब टेरिफ की वजह से जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाइना टेरिफ और चाइना +1 वाला, तो उसमें प्रॉब्ली और ज्यादा एम्बिशियस नंबर्स होंगे, बट फॉर दैट यू नीड पोर्ट कनेक्टिविटी। और लास्ट इज हाई ट्रैफिक डेंसिटी, जो ये पैसेंजर डिकंजेशन के लिए भी है, राइट, वेयर पैसेंजर एंड फ्रेट आर having too much congestion. तो ये वही है कि DFC से ट्रांजिट टाइम अप टू 40% उड़ जाता है, राइट, significantly efficient, 30% efficient for many industries. Far 38,000 trains have been run on these dedicated freight corridors already. जबकि अभी थोड़ा सा कंप्लीशन बाकी है वेस्टर्न में, राइट, ईस्टर्न इज फुल्ली कंप्लीट एंड ऑलरेडी देयर इज सो मच ट्रेन ट्रैवल across India. There are number of, so we know about the dedicated eastern and western corridors, but there are corridors defined for east-west also, which is cutting across from east to west, and there is a east coast freight corridor as well, right?
and many more actually already proposed. So you can see how the number of trains have increased in the last 5 years from hardly any trains in FY21 to nearly 88,000 trains in 24. ये 35 times हो चुका है और अभी भी there is much more to happen once the full DFC starts working at full operational level, full capacity. It will be much more. And the most important point is the speed of trains. You can see average India का speed होता है 25 km per hour, and these are at nearly 50 kilometers per hour. And like very back only, it was in news that cabinet has given more than 18,000 crore. 4 dedicated projects have been identified, which is part of, which are going to ease out the congestion in some key nodal tracks and will improve the freight mobility on those, So the idea that, we have seen is that continuously they're adding on the dedicated freight. Sometimes it is completely dedicated, sometimes just doubling frees up, a lot of congestion. And that is also going to happen in many areas. Yeah, so from the now coming to the main the ideas, how this is an investment opportunity. We started with that Indian Railway needs around 50 lakh crore of investment, 50 trillion rupees over a 10-year period. And this chart basically shows that how the broader push from the government side, at least on through the budget, and what is the kind of capital investments that have happened so far. And then we have another side where we estimate that what can happen now in the next 5 years. First 5 years data is here in front of us. Obviously, it's a growth in the rail from 16,000 crore, which used to happen, which will hardly, any amount will go in any kind of a capex activity, actually, if you think about it, to 2.5 lakh crores of talking about, right? So 20% plus CAGR over a 15 year period. So around 15 times approximately. Yes. So that's I think we can talk about this slide first. So you can see that from since inception we have done only around 12 lakh crore, which includes let's say around over the last 10 years, if you see around 7-8 lakhs crores have come just in the last 10 years. But that's the kind of scale that we are looking at, अब जब हम railway की बात कर रहे हैं आज. And going forward, I think we have taken very conservative estimate of just a 6% growth on the railway allocation, but that could be much higher. I think there are various metrics that we can kind of सोच सकते हैं ये चीज को estimate करने. एक बहुत ही conservative number के हिसाब से भी we are looking at something like a 15 lakh crore of new investment that are going to happen in the next 5 years. 5 years, by 2030. तो जो 10 साल का जो होराइजन है उसमें देखेंगे तो 25 लाख करोड़ roughly just from the railway budget is coming for railway investments. And obviously there are other entities involved, the private sector and the state governments, which are also allocating capital on this on various projects, whether it is regional transport, regional rapid corridors, or metro lines for city specific things, or dedicated freight corridors. So the total budget is comparable to the vision that government had around 2020 when they talked about like 50 lakh crore over the next 10 years. तो हमें और PPP टाइप की चीजें भी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और things like monetization through InvITs, right? So certain dedicated lines might be monetized. So ये innovations in financing probably we'll see in the next 5 years.
क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट से नहीं होने वाला है 50 ट्रिलियन, राइट? तो 25 ट्रिलियन तो हो जाएगा, बाकी का बाहर से आना पड़ेगा थ्रू अदर मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, थ्रू लिस्टिंग सर्टेन एसेट्स एंड सो ऑन. तो विल सी. पर इसमें सबसे बड़ा तो ईपीसी दिख रहा है, राइट? So Correct. nearly 30% odd. So I think I have a EPC है. slide for this where we Okay. also see the growth rate. Those are Okay. the cumulative numbers, but we get, so idea here is that that large amount every year. So where is it going? So eventually we can try and figure out that which companies are going to benefit from these capital investments. So I think more than 60% will just go to engineering and construction companies, and remaining to the rolling stock, or which are providing the equipments or machinery components to specific sectors. Okay. Okay. So I think we were talking about the numbers. Yeah. So more than 5 lakh crores is going to EPC. So that looks like the largest opportunity. And so construction naturally, right? I mean, constructing railway lines, constructing stations, constructing overhead electricity, and all of that. That comes under EPC. And then the rolling stock, right? Usko train sets chahiye hai. So that's the second opportunity. And third is the safety signaling telecom, right? To support the railways moving around, the trains moving around. Yeah, So I these think are the three largest. that safety aspect has come on the fore in the last budget. Also, we have seen that significant capital expenditure has been provided over the last 2 years. Like 8 years back, we were doing around 5,000 crore on safety related, kind of road safety, or where you had and then the signaling systems, and specifically the what we call as now modern safety and operational systems. Government is spending around 20,000 crores from the budget. That's the average that we have done over the last 2 years. So you can look at the CAGRs. So its focus has completely, has been on this part. As we are going to higher average speeds, doubling on DFC or freight, and maybe 160 to 180 kilometer per hour on the passenger trains. So next question comes is, how you should structure your portfolio, given that, this is where a lot of capital investment, the money is flowing. Right. So how do you chase the money trail and identify the investment opportunity? Sure. So let me take you back to the ecosystem, and then we can talk about this. Yeah. Absolutely. So there are, as you look at the ecosystem and not just few handful of railway companies, so-called railway companies, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी companies मिल जाती हैं, right? This is a universe of nearly 180 to 100 companies at least, I would say, if you look at all the dimensions of railway ecosystem. And if you have such a broad universe, then you can go and look for companies which are safer in terms of their balance sheets, which have resources on their balance sheets to monetize on the opportunity. You can look for companies which have certain strengths, right? Moats or competitive advantages, and you can find them at the fair value, right? That's what you want. And you want to have a diversified portfolio across these multiple dimensions. But at a given time, opportunity will be in some of these, not in all of these, right? क्योंकि कोई सेक्टर इसमें से आइडेंटिफाई हो गया है, वो बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है, या कहीं पे लेवरेज बहुत ज्यादा है, एटसेट्रा, तो वो आपको नहीं लेना है उस समय. जब अंडर वैल्यूड हो जाएगा तब आप ऐड कर सकते हैं. तो ये आज की डेट में एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, क्यूरेटेड पोर्टफोलियो, बेस्ड ऑन दैट अर्लियर स्लाइड, ऑल दोज काइंड ऑफ यूनिवर्स में से सेलेक्टेड. आज जो साइंटिफिक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क से पास होता है, विच मींस दीज आर नॉट कैपिटल डिस्ट्रॉयर्स, हमने उनको हटा दिया. विथ वीक बैलेंस शीट्स, लॉस मेकिंग कंपनीज, हमने
Companies which don't have competitive advantage उनको हटा दिया, which are capital eroders. हमने overvalued companies को हटा दिया, which are capital imploders. And you're left with capital multipliers. And the huge TAM we have already said, right? The huge growth opportunity जो है, तो growth opportunity भी है, company के पास resources भी है, companies के पास products भी है, and it is valued fairly or at a significant discount. तो supernormal company supernormal price पे available, right? तो अगर ये सब condition डालें तो ऐसा एक curated portfolio बन सकता है, जिसमें focus will be on construction and engineering, freight and logistics, machinery and equipment, infrastructure financing, some metals and mining, क्योंकि ये रेलवे में बहुत ज्यादा स्टील वगैरह लगता है, right? And then professional and commercial services. तो ये सब मिला के आपको एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी सेक्टर, मल्टी इंडस्ट्री पोर्टफोलियो मिलता है. And despite it being multi industry, it is actually giving you benefit of the railway growth factor, right? Right. ऐसा बनाया जा सकता है. और इस पोर्टफोलियो का सबसे खास बात आप देखिए, बेंचमार्क का पी इज नियरली 28-29 और I think this is the equity small cap, right? Yeah. और इस पोर्टफोलियो का बन सकता है nearly 22 price to earnings, okay? While इसकी growth is at 18% और इंडिया का नॉमिनल ग्रोथ जो कि होना चाहिए स्मॉल कैप में 12 to 14% होना चाहिए एट बेस्ट, राइट? तो उसके कंपैरिजन में आपको एक पॉसिबिलिटी है, which shows the mispricing, right? And the opportunity which is there in the railway sector if you look for it carefully. Yeah, the idea is that you don't have to compromise on the growth, because once you are exposed to the high growth vector like a railway, but the only thing that remains is that you have to remain cautious on the valuation front, which is where our focus and, showing you this curated portfolio in the sense that there is a possibility. That's not that you have to go with the most storied name, which typically went overvalued. Exactly. So that it's possible, and the numbers are telling, and this is well diversified. It's not like a 2-stock, 5-stock, approach. Exactly. This is what, 12 stock portfolio, 15, 15 odd stocks. Yes. Yeah. Yeah. So it is reasonably diversified. Yeah. I think that brings us to the end of this presentation, but I think we will have some questions where we can address certain specific queries. We have floated the question sheet, so we have actually gotten a number of questions. Maybe Vikas, Mahir will summarize those, and go ahead, Mahir. I'll stop sharing this. Perfect. Perfect, sir. Thank you for those insights. Like you mentioned, we had rolled out the questionnaires during the registration part, and हमको interestingly, we've received over 40 plus questions, but due to time constraints हम सारे तो definitely नहीं ले पाएंगे. But what I have done is मैंने काफी सारों को club कर दिया है. So probably we'll take 2 or 3 questions that should broadly cover everything. So the first question that we have right now is that railways has given stellar returns in the last 4 years. But what is the future of this sector, considering कि बहुत सारे stocks जो है इनमें वो PSU tag के अंदर आते हैं. Also, let's say मैंने past history वगैरह देखकर मैंने railways enter तो कर लिया था. But मैं अभी and somewhere मैंने enter किया था in September, October जब portfolio peak पर था. And currently I'm sitting at 25-30% loss. So इसका क्या future है मेरे लिए? Should I do top ups? Should I stop or should I exit? So opportunity wise, see हमें past नहीं देखना है कभी भी, right? Past देख के कभी भी invest नहीं करना है, हमें future देख के invest करना है. और फ्यूचर में हमने अपॉर्चुनिटी क्या है वो बताया, राइट? तो द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो क्लियरली है. क्वेश्चन ये है कि उस ग्रोथ के लिए क्या प्राइस देना है. और वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, ये 18% का फोरकास्ट है. बाकी हमने टाइम भी बताया कि भाई कितना नेक्स्ट 5 इयर्स, सॉरी नेक्स्ट 5 इयर्स, इट्स इंक्लूडिंग द लास्ट 5 इयर्स, राइट? तो
जिसमें कि ऑलरेडी 8-10 लाख करोड़ हो चुका है, तो अभी भी 10-12 लाख करोड़ एटलीस्ट मिनिमम बाकी है। और ये सब कंपनीज का टर्नओवर देखोगे तो देयर आर फ्यू थाउजेंड करोड़ एक कंपनी का होता है। तो वो नेक्स्ट 5 इयर्स क्या मतलब अभी के स्पीड से चले गए तो 10 साल का ऑर्डर बुक है, ओके, या ऑर्डर अपॉर्चुनिटी है। तो ऑब्वियसली वो फास्टर ग्रोथ करेंगे और दे विल ट्राई टू फिनिश इन नेक्स्ट 5 इयर्स। तो द ग्रोथ रेट्स आर एक्सट्रीमली हाई। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी इज हाई, ग्रोथ रेट इज हाई। लॉट ऑफ कंपनीज हैव मोड्स, यानी कि वही हैंडफुल ऑफ कंपनीज हैं जो ये प्रोडक्ट बना सकती है और रेलवे को दे सकती है, राइट। अब उसमें से आपको जो कंपनीज का बैलेंस शीट स्ट्रांग है और जिनका वैल्यूएशन लो है वो लेना है। और हमने अभी बताया कि ऐसा एक क्यूरेटेड पोर्टफोलियो बन सकता है, राइट। तो अपॉर्चुनिटी क्लियरली है, 22 का पीई है, 18, और हमने पहले भी बताया कि हाउ टू फिगर आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, राइट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इन्वर्ट ऑफ द अर्निंग्स यील्ड, राइट। पीई का उल्टा कीजिए आप, उसके बाद में ग्रोथ रेट, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है लॉन्ग टर्म में, वो ऐड कीजिए, एंड देन देयर इज अ पॉसिबल री रेटिंग। तो अगर वो मिसप्राइस्ड है, कोई चीज अगर लेट्स से कि 15% से ग्रो हो रही है, तो उसका क्या पीई होना चाहिए। आज इफ यू कंपेयर विद द एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो वहां तो सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट से लेके एट बेस्ट 13-14% का ग्रोथ रेट होता है, राइट। एंड देन दोज आर valued at something like 40, 50, 70 PE. So you can go and check the indices and you can go and check the growth rates. तो उस हिसाब से आपको ये एनालाइज करना है कि इसमें री रेटिंग कितना पोटेंशियल है। उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न। यू डू योर ओन जजमेंट, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, बट इन शॉर्ट इफ यू आस्क आवर ओपिनियन, वी थिंक यस, इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। तो And see, again, just to reiterate that point that we always keep saying, you have to, when you talk about railway as a growth factor, this is obviously a thematic opportunity, so उसका risk profile भी ज्यादा है। तो आपको एक asset allocation approach follow करना है, and you know, people who have done that, lot of investors including ourselves, you know, we have a core allocation where we invest in large, mid, small, multi-cap portfolio like Amrit Kal or, you know, similar portfolios, and then we allocate 5 to 10% into these growth factors to boost our overall portfolio returns. So if that is the approach, then you will have a better, you know, when such turbulent active, you know, phase come in the portfolio, because it's not going to be you know, straight up trajectory always. Okay, it was a lucky phase that, you know, because you know, this was completely missed by Mr. Market, तो बहुत ही undervalued you know, valuations पे available थी ये, let's say 3 or 4 year। अब उतना undervalued नहीं है, right? Then that time से certain companies were single digit P, जो आज you know बहुत ज्यादा है उनका valuation। तो वो हर वक्त तो नहीं मिलता, लेकिन growth opportunity strong है। तो once certain companies will go to fair value or beyond fair value, तो obviously टाइम के साथ उनमें करेक्शन होगा, एंड दैट विल इम्पैक्ट द अदर कंपनीज इन दैट सेक्टर, तो वो भी गिरेंगे बिकॉज वो यू नो कंबाइंड सेलिंग होता है, तो वो वॉलेटिलिटी इवेंट आएगी, और उसको यू नो उसको सेल थ्रू करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेना है, और उसमें देयर विल बी सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स व्हिच विल बी मच मोर स्टेबल इन दैट एरा, और पोर्टफोलियो रीबैलेंस होते रहेगा, राइट। आई मीन जो ओवर वैल्यूड कंपनीज बाहर निकलते जाएंगी या उनका वेट रिड्यूस होते जाएगा, अंडर वैल्यूड कंपनीज अंदर आएंगी या उनका वेट इंक्रीज होगा, राइट। इस तरीके से डिस्पाइट हैविंग हाई रिटर्न्स इन द पास्ट, यू कैन स्टिल ट्राई टू ऑप्टिमाइज फॉर फ्यूचर। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने रीबैलेंस की बात की विकास में, एक पॉइंट यहाँ पे कि समटाइम्स यू नो बहुत सीधे सीधे कोरिलेशन आपको नहीं दिखेगा, यू नो, सर्टेन कंपनीज का, राइट। जैसे पावर की बात की हमने प्रेजेंटेशन में भी, दैट इज रेलवे इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पावर इन इंडिया, एक सिंगल जो एंटिटी है, तो उसकी ग्रोथ काफी कुछ लिंक्ड होती है पावर यू नो कंपनीज की ग्रोथ से।
तो अगर कोई ग्रोथ सेक्टर का पार्ट वो वैसे इनडायरेक्टली अगर टर्शियरी लेवल पे अगर बन रहा है तो भी हम उसको उस ग्रोथ सेक्टर में इंक्लूड करेंगे, और ऑब्वियसली प्रोवाइडेड इट इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी और गुड डिस्काउंट टू इंटरेस्टिंग वैल्यू। तो वो चीजें रीबैलेंस के थ्रू एड्रेस होती हैं, और इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्योर प्ले। तो हमारा वही एकदम 4-5 स्टॉक 7 स्टॉक जो हो सकते हैं वही होंगे। वी विल मेंटेन द वैल्यूएशन डिसिप्लिन एंड वी विल try and cover the whole ecosystem where the growth is getting transmitted because of the core growth sector. Right. Fine. Sir, the second question that we have right now is कि जैसे हमने throughout the presentation भी discuss किया and in general भी जो समझा जाता है कि railways जो है related to domestic theme कि आपका passenger movement है, goods movement है, तो why is the price of railway stocks getting affected due to Trump tariffs? So मेरा portfolio का जब ही नहीं है तो मेरे प्राइसेस क्यों गिर रहे हैं is the question that is coming in next. And नहीं, also sorry, what is the just to complete that question कि ट्रम्प टैरिफ्स का ओवरऑल रेलवे एज अ सेक्टर पे भी क्या इम्पैक्ट रहेगा या क्या हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इससे? तो टैरिफ का मेरे हिसाब से डायरेक्टली फंडामेंटल्स पे रेवेन्यूज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, एज फार एज आई कैन सी हार्डली एनीथिंग. सेम वे कंपोनेंट वाइज मे बी फ्यू कंपोनेंट्स वी माइट बी इंपोर्टिंग, तो वहां भी टैरिफ, राइट. हम रेलवे एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को तो फिर टैरिफ से हमें मतलब होता, बट हमारा पूरा रेवेन्यू इज वेरी डोमेस्टिक ओरिएंटेड, राइट. रेलवे कंपनीज आर सेलिंग प्योरली टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू द इंडियन रेलवेज. तो इसमें टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं. टैरिफ इज फॉर, आप कोई चीज यूएस को बेच रहे हो तो यूएस उस पर टैरिफ लगा रहा है. तो ऐसा कुछ भी हम रेलवे में हार्डली कोई कंपनी कर रही है, ठीक है. आगे पीछे करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी है, वो एक अलग बात है. सो पहली बात, फंडामेंटल्स पे तो हार्डली एनी इफेक्ट है. अभी रेलवे स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है? जब पूरा मार्केट नीचे जाता है तो साथ में ऑल द स्टॉक्स गो डाउन. कोई कम जाएगा, कोई ज्यादा जाएगा, ये अलग बात है. और शुरू में पैनिक में सेलिंग हो रहा है या कोई एफआईआई है या कोई एक सर्टेन ग्रुप है तो उसको जस्ट कैश में जाना है, तो दे आर सेलिंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम. पर थोड़े दिन के बाद में जब सैनिटी आएगा, एनालिटिक्स आएगा, तो जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे डिसाइड किया था, राइट, कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंपनीज आर गोइंग टू बी, पीपल विल रियलाइज कि भाई ये तो ज्यादा गिर गया है, राइट, ये मोर अंडर वैल्यूड हो गया है. तो दे आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गर इन इवन इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइसेस. फंडामेंटल्स तो है ही स्ट्रॉन्गर, बट शेयर प्राइस भी उसका जल्दी रिकवर होने के चांसेस है हमारे हिसाब से. स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कंपनीज का फंडामेंटल्स अफेक्ट होने वाले हैं क्योंकि उनके इनपुट कॉस्ट आउटपुट कॉस्ट में चेंजेस आएगा. अगेन, इंडिया की ग्लोबल कंपनीज का इनपुट कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके आउटपुट में हो सकता है, राइट. अगर इंडियन एक्सपोर्टर है टू यूएस तो नेचुरली उसका एक्सपोर्ट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. स्ट्रॉन्ग यूएस ग्लोबल कंपनीज है, उन्हें इनपुट कॉस्ट और आउटपुट दोनों का प्रॉब्लम है, ओके. बट दे माइट बी ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटीज, बट फ्रॉम अ 5-year काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव. और वीक कंपनीज तो वैसे भी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबल हो. राइट. सो इसे एक समरी में ऐसे डाल सकते हैं कि फंडामेंटल इम्पैक्ट कुछ नहीं है, बट क्योंकि एक नीजर्क रिएक्शन है नॉट ओनली जस्ट इन इंडियन मार्केट्स बट थ्रू आउट द ग्लोबल मार्केट्स, तो यस प्राइस करेक्शन हुआ है, बट वाइल द अंडरलाइन फंडामेंटल्स रिमेन कंसिस्टेंट या स्ट्रॉन्गर, तो नेचुरली जब रिकवरी आएगी या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट विल बी फास्टर देन द ब्रॉडर इंडेक्स. यस, एंड साइंटिफिक इन्वेस्टर तो जब अपॉर्चुनिटी सस्ते में मिलती है, राइट, तो वो लेता है, राइट. करेक्ट, परफेक्ट. And sir, a final question that we would like to take is कि how much of my portfolio, मेरे equity portfolio का कितना % allocation should it go towards railway as a sector? So that we have been consistently saying, कोई भी थीम में 10% से ज्यादा आपका
इक्विटी में अगर 100 रुपए है, उसमें से 10 रुपए से ज्यादा आपको एक थीम में नहीं डालना है, राइट? वी हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग दैट. Perfect. I think one Yeah. question we can take from the chat. I think that that market has gone up on Friday, but my portfolio has come down. So we have to be clear that obviously that you're comparing with the market, but आपको अगर अल्फा जनरेट करना है तो मार्केट से आपको डेविएट करना पड़ेगा, और कभी जब वो डेविएट करने की वजह से वो पोर्टफोलियो आपको कभी क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको अल्फा जनरेट करना है, डेविएशन इज गिवन, तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो मार्केट पोर्टफोलियो से अलग है, इसलिए उसका नियर टर्म जो रिएक्शन हो सकता है वो भी डिफरेंट हो सकता है. तो ये आप 3 to 5 ईयर होराइजन अगर नहीं रखते हैं तो ओमनीसाइंस की कोई भी स्ट्रैटेजी सूटेबल नहीं है उन इन्वेस्टर्स के लिए. तो ऑब्वियसली आपको अपना रिस्क प्रोफाइल, रिस्क असेसमेंट बहुत क्लियरली करना है, और इफ whatever money that you can more than 3 years and ideally for 5 years is something that you have to come to understand that why those stocks been bought, क्या rational है उनके पीछे, क्या आउटलुक है. एंड ऑब्वियसली ऑलवेज यू योरसेल्फ कैन डू दैट एनालिसिस कि भाई वो कंपनी का फंडामेंटल स्टडी कीजिए, वो कंपनी का वैल्यूएशन स्टडी कीजिए, वो दोनों काउंट पे इट शुड बी अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, इट शुड बी नॉट ओवर वैल्यूड, और इफ दोज थिंग्स आर ट्रू देन इट मे फाइंड प्लेस इन द पोर्टफोलियो. नॉट दैट इसका प्राइस ऊपर जा रहा था या फिर मैंने खरीदा और हमारे खरीदने के बाद उसका प्राइस गिर गया है तो वो तो खराब कंपनी है और उसको क्यों नहीं बेचा गया है, राइट? तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए, तभी इजीली आप 5 ईयर का कमिटमेंट दे पाओगे. लाइक बिहेवियरल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. Perfect. So that brings us to the end of this webinar. So I think thank you Ashwini sir and Vikas sir for the insights, and thank you for the to the audience as well for tuning in on Saturday morning. Just to reiterate, no part of this webinar should be construed as an investment advice. You are all requested to please contact your financial advisors before taking any investment decisions. आप हमें सोशल मीडिया पे वी हैव आवर पेजेस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एक्सेट्रा. वहाँ पे आप डेफिनेटली ओमनीसाइंस को फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली सच इनसाइट्स. एंड अगर आप में से किसी इन्वेस्टर्स की क्वेरीज रह गई है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट info@omnisciencecapital.com. ये हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, या तो आप हमारे वेबसाइट से हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. So see you all next time. Till then, thank you and happy investing. Thank you. Thank you. Bye.